जय जिनेन्द्र सब लोग। मेरा नाम है समय सार जैन। आपको बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ तो बहुत खुशी है। लॉन्ग टाइम नो सी। नाउ बिफोर कमिंग टू एनी कैजुअल टॉक्स, diving straight to today's topic, why doing hotel management is not advisable for the Jains. Okay, होटल मैनेजमेंट करना क्यों, क्यों जैनियों को होटल मैनेजमेंट से दूर रहना चाहिए। ओके, या फिर जैन लोग क्यों होटल मैनेजमेंट करना अवॉइड करना चाहिए। इस पूरे वीडियो को ध्यान से, फोकस से और पूरी कंसंट्रेशन से देखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसके बाद एंड में आपका जो भी ओपिनियंस है, आपका सारे ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, ठीक है। ओके, तो जैसे जैनियों को क्यों होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। देखो, जब हम होटल मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि होटल मैनेजमेंट में, यानी कि जो भी होटल मैनेजमेंट करेगा वो भविष्य में होटल मैनेजर बनेगा। और वो होटल मैनेजर कहाँ बनेगा, जैसे कि 5 स्टार होटल, 6 स्टार होटल, ये जो भी स्टार होटल्स होते हैं ना, ये जो भी है 3 स्टार से लेकर 6 स्टार तक, all the way from 3 star hotels to 6 star and maybe even 7 star hotels. So basically ये जो भी स्टार होटल्स है वहाँ लोग काम करेंगे, जो भी लोग होटल मैनेजमेंट करेंगे। और आपको पता है, जैसे कि जो भी हो, 3 स्टार होटल हो, 4 स्टार होटल हो, 5 स्टार होटल हो या फिर 6 स्टार होटल हो, ये जो स्टार होटल्स में नॉर्मली इट इज़ दोनों रहते हैं, शाकाहारी भी रहते हैं और मांसाहारी भी रहते हैं। बोथ वेज एंड नॉन वेज फूड विल बी सर्व्ड इन दीज होटल्स। और यदि हम जैन होकर अगर हम होटल मैनेजमेंट करेंगे तो भविष्य में जाहिर सी बात है, जो भी लोग होटल मैनेजमेंट करेंगे वो लोग ऐसे ही जो भी है, जैसे 5 स्टार होटल्स वगैरह, वहाँ ही काम करेंगे। तो जब हम वहाँ काम करेंगे होटल मैनेजर बनकर, वहाँ उस होटल का हर चीज़ का इंचार्ज हम होंगे। जैसे कि एक बार आप होटल मैनेजर बन जाओगी, हाँ, तो उस होटल में ओवरऑल जो भी चीज़ है उन सब का सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप रहेंगे, आप रहेगा या फिर आप रहेगी। तो आपको ना ही सिर्फ शाकाहारी भोजन को मेंटेन करना है, जो भी वहाँ नॉन वेज फूड सेक्शन है, जो भी दारू मदिरा, ये जो है ना, वाइन, शैम्पेन, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो भी, क्योंकि 5 स्टार होटल यानी कि वहाँ एक टाइप का वो बार काउंटर्स भी होंगे, जैसे कि वो पार्टी हॉल्स में बार काउंटर्स होंगे। वहाँ दुनिया का हर अलग अलग टाइप का अल्कोहलिक ड्रिंक्स और अल्कोहलिक बेवरेजेस भी मिलेंगे। तो इन सारे ये सारे चीज़ों के लिए आप प्राइम रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। you will be the sole responsible person to maintain all these things. मान लीजिए कि कोई जैन पुरुष या जैन स्त्री होटल मैनेजर बनते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से if a Jain man or a Jain lady becomes a hotel manager, just for an example, do you think in 5 star hotels and all, do you think that they will have that luxury to say that, okay, me as a Jain, I will only take care of those things where I will only take care of and manage those things and those departments where there are no non-veg food and no alcoholic beverages. Do you think you will have the luxury to say that?
नो, वंस यू बिकम अ होटल मैनेजर, एक बार जब आप होटल मैनेजर बन जाओगे, आपको आपको उस आपको उस पूरे के पूरे होटल का हर चीज़, छोटे छोटे चीज़ से लेकर बड़े बड़े चीज़ों तक, हर चीज़ का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति आप होंगे। तो यदि आप जैन भी हो, आपको आपको उस पूरे के पूरे होटल में ऑफ कोर्स बाकी जो भी चेयर्स है, जो रूम्स है, जो भी क्या बिस्तर है, और नो ऑल द बेड्स, द ब्लैंकेट्स, द बेड शीट्स, ऑल दैट इज़ फाइन। लेकिन खास कर की जब जब रसोई की बात आते हैं, व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग किचन्स, यू विल बी इन चार्ज ऑफ बोथ वेज एंड नॉन वेज। जितना जितना जिम्मेदारी से आपको आपको वेज फूड डिपार्टमेंट को आपको हैंडल करना पड़ेगा, उतना ही जिम्मेदारी से आपको नॉन वेज का डिपार्टमेंट को भी हैंडल करना पड़ेगा। और जितना ही जिम्मेदारी से आप क्या जो भी फ्रूट जूसेस है, जो भी कूल ड्रिंक्स है, जितना ही जिम्मेदारी से आप ये सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा, उतना ही जिम्मेदारी से आपको अल्कोहलिक बेवरेजेस को भी हैंडल करना पड़ेगा। You will have to even maintain, alcoholic beverages, everything in connection to alcohol, everything in connection to alcoholic beverages and non-veg food. You will be completely in charge of that. You will have to, make sure that these non-veg food is served to, is served to the guests who come to that hotel, and these veg food, should be served to these people who are vegetarians. So what I'm trying to tell you is, मैं जो मैसेज आप सबके लिए कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर कोई जैन पुरुष या स्त्री होटल मैनेजमेंट करेंगे, भविष्य में आपको ऐसा स्टार होटल्स में काम मिलेगा। और वहाँ एक बार आप ये जो भी स्टार होटल्स है, जैसे कि 5 स्टार होटल, 6 स्टार होटल, जो भी ये स्टार होटल्स है, एक बार आप वहाँ काम करोगे, आपको उस पूरे के पूरे होटल का हर डिपार्टमेंट के इंचार्ज होगा। हाँ, ये बात है कि आपके नीचे, अंडर यू, आपके नीचे आपका सबॉर्डिनेट्स होंगे, आपका असिस्टेंट्स होंगे, आपका सेक्रेटरी होंगे, आपके नीचे जो भी आपका असिस्टेंट्स वगैरह है, वो सब होंगे। और क्या हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, क्या बोलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हेड होते हैं। like for example, in one classroom, let's say for example in a school, in a classroom, a teacher will be a class teacher of one class, and in order to maintain his or her class properly, that class teacher, they will keep, they will observe properly, and they will arrange one student to become monitor of that class, just to maintain discipline in that class. Though that teacher may arrange one student to become the monitor of that class, but overall that entire class will be under the responsibility of that class teacher. Just like that, once you do hotel management, and once you become a hotel manager in these star hotels, yes, every department, the vegetarian food department, the vegetarian and the vegan food department, and the non-vegetarian food department, every department, they will be one subordinate for you, and they will be like, there will be, you can say, someone like a what do you say, assistant manager, someone like an assistant manager, or maybe like someone like, just like how I gave you the example of the class monitor. Just like that, there will be other people who will be in charge of those departments. For non-veg, there will be one department head. For veg, there will be another department head, and for alcoholic beverages, there will be one department head, and for non-alcoholic beverages, there will be another department head. But overall, since you have done hotel management, and since you are the hotel manager,
overall for the entire hotel, you know, if there is one person who is solely, and you know, if there is one person who is primarily responsible for that entire hotel, it will be you. It will be that person who does hotel management, and who has become the main hotel manager. सो फॉर अस जेन्स, हम जेनियों के लिए यदि हम होटल मैनेजमेंट करेंगे, तो हमको तो हमको दोनों शाकाहारी और मांसाहारी, शराब और कूल ड्रिंक्स, इन सारे चीज़ों को हमको हमको हैंडल करना पड़ेगा जब हम ये स्टार होटल्स में काम करेंगे। तो 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 इसी वजह से हम जेनियों को होटल मैनेजमेंट करना अवॉइड करना चाहिए। And one more thing I'll tell you guys. See, I'm not trying to demotivate you. I'm not trying to I'm not trying to quash your dreams and passions. Okay, I'm not trying to say that you should. I'm not trying to dictate to you what you should do and what you should. I'm not trying to dictate to you what you should do and not do. But as a true Jain, it is my responsibility to make you understand that. See, when you take up these kind of jobs, you will have no option but to deal with all those things which are against our Jain dharma. So that is why, to all those Jains around the world, here in India and even abroad, any of the Jains, both Digambar, Shwetambar, all of you, if you are planning to do hotel management, okay, please rethink about it. Please rethink whether you really want to do hotel management or not. At least after watching my video, आप सभी को मेरा ये वीडियो देखने के बाद कम से कम एक बार ज़रूर सोचिए, अगर आप सच्चा जेनी हो तो क्या आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए कि नहीं। हाँ, ये बात है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 स्टार होटल्स में नहीं जा सकते हो। ओके, I am not trying to say that we as Jains, we should not go to 5-star hotels. Let's say, for example, for vacations, we travel to a foreign country. Okay? जैसे कि हमारा समर वेकेशंस के लिए, हाँ, जब भी हम जेनियो फॉरेन टूर्स पे जाते हैं, जब भी हम विदेश में जाते हैं, वहाँ जो भी फॉरेन कंट्री में हम जाते हैं, वहाँ रहने के लिए हम ज़रूर किसी ना किसी 5 स्टार होटल या 6 स्टार होटल में हम अवश्य रहेंगे। Okay, see, I'm not saying that we as Jains, we should not go to 5-star hotels. You can go to 5-star hotels. You can book and take up a room in a 5-star hotel. And even as I said, you can even celebrate your birthdays. You can even celebrate your birthdays and your weddings, and that, what do you say, wedding receptions, etc. As Jains, you can do birthday celebrations, weddings and wedding receptions in 5-star and 6-star hotels. That is fine. I'm not saying that. But if you want to work in a 5-star hotel, जब बात आते हैं आपको 5-star होटल में काम करने के लिए, जब बात आते हैं कि आपको 5-star होटल में नौकरी मिलने के लिए, when it comes to doing a job, when it comes to taking up a job as the hotel manager in these star hotels, then we as Jains, we need to rethink it, and honestly saying, don't mind, we have to avoid it. So okay, there are one more thing, as we all know that one more thing, we as Jains normally, okay, even if we do jobs only for a certain limited of time. After doing jobs, after doing job for a number of years, ultimately we as Jains, we should be doing our own business. Okay, we need to open up our own companies and businesses. Okay, so हम जेनियों को अधिकतर एक ना एक दिन हम सब तो हमारा खुद का बिजनेस खोलेंगे, लेकिन तब तक until we open up our own business, if in case you want to do any job, in this video, all I'm trying to tell you is, please rethink. Please, seriously sit and rethink about if you really want to do hotel management. Because see, either if you do hotel management, even if you don't like, even if you don't want, and even if you don't like,
you will be in charge of all those things, you will be in charge of all those areas, you know, where things are against our जैन धर्म. हमारे जैन धर्म के, हमारा जैन धर्म में जो भी पाप है, जो भी दोष है, उन सारे चीज़ों के लिए भी, उन सारे क्या अबक्ष भोजन के लिए और क्या अबक्ष ड्रिंक्स के लिए भी आप जिम्मेदार होंगे. बिकॉज यू विल बी इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग बोथ वेज एंड नॉन वेज फूड, alcoholic and non alcoholic beverages. You will be in charge of everything in that star hotel. So this is the reason, if you want to for those Jains, if if you're planning to do hotel management, and if you're planning to work in a 5-star hotel, and if you're planning to work in a 6-star hotel or in a 5-star hotel, then I will say please rethink about it. Okay, please rethink about it. But let's say, for example, just when you go for vacations, you want to stay in a 5-star hotel, please go ahead, nothing wrong in that. I know a lot of Jains will say, even for vacations and all, even for celebrations and all, we should not go to 5-star hotels, we should not go to 5-star hotels, we should not go to luxury resorts. A lot of Jains will say this. But trust me, it's nothing like that. Even as Jains, you can go to 5-star hotels. But please, I will say, as Jains, we should not be working in 5-star hotels. मेरा इस वीडियो का सिर्फ यही मैसेज है कि आपको 5-स्टार होटल में जॉब नहीं करना है, लेकिन हाँ, आपका वेकेशन के लिए, आपका बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए, आपका शादियाँ के लिए, वेडिंग्स के लिए, और क्या वेडिंग्स के बाद आपका वेडिंग रिसेप्शन के लिए, और क्या जो भी आपका कंपनी का एनुअल पार्टी होगा, कंपनी का एनुअल सेलिब्रेशंस होगा, वो सारे सेलिब्रेशंस करने के लिए आप ज़रूर 5-स्टार होटल्स में जा सकते हो. क्योंकि जब आप कस्टमर बन के 5-स्टार होटल में जाते हो, when you go to these star hotels as a customer, you can demand what you want, because see, you will be paying the money, and you can demand what you want. And of course, we as Jains, even when we go to 5-star hotels, we will be asking only for vegetarian food, and that too in vegetarian food, we'll be taking pure Jain food, and of course, we won't be taking any alcoholic beverages. We will go for either coffee, tea, cool drinks, milkshakes, juice, lassi, etc. So we as Jains, we can definitely go to any of the star hotels as customers. But my only message to you is, if you want to work in 5-star hotels, अगर आप ये जो 5-स्टार और 6-स्टार होटल में जॉब करना चाहती हो, if you want to work as a hotel manager, or if you want to do any kind of job in these 5-star hotels, or in any of these star hotels, then we as Jains, we should avoid it. This is my message to you. But as customers, we can go to 5-star hotels, and please, even when you go to 5-star hotels, only eat pure vegetarian food. When you are a customer, you have the luxury to demand what you want and what you don't want, because you are a customer. But when you go to these hotels to do a job, you don't have that luxury to demand what you will do and what you will not do. Once you become the hotel manager, you will be in charge of the entire hotel, be it everything, veg, non-veg, everything. So this is the reason why we as Jains, we should not do hotel management. And see, even outside in restaurants, okay, when you talk about restaurants, okay, when you say hotel, it is like this 5-star hotel, along with the restaurants downstairs. Upstairs, there will be all these lodging, all these beds and luxury lodging. This is called hotel. Speaking about restaurants, okay, for example, outside when you go, you see a lot of very luxurious and fancy restaurants. So as Jains, you can become the managers of pure veg restaurants. Okay, when you talk about restaurants, okay, or restaurants, even you as a practicing Jain,
you can become the manager of any pure veg restaurant. For example, there are so many veg restaurants. There is Shiv Sagar veg restaurant. There is Jyoti. There is Sai Dev. There is Shabri veg restaurant. And even there is one more. What do you say, that Vasant Bhavan, Anand Bhavan. So what I'm trying to tell you, all these, yeah, even Coffee Culture, all these pure veg restaurants where only pure veg is served. The restaurants are very luxurious and fancy, but ultimately they are pure veg restaurants. Like for example, even when you go to the malls, okay, when you go to the shopping mall, there will be there will be lots and lots of restaurants around you. So so uh, uh, in those restaurants, in some restaurants there will be both veg and non-veg, but there are lot of pure veg restaurants. So we as Jains, and even to all those who are Jains, you can definitely become the manager of any pure veg restaurant. But when you talk about five-star hotels, when you talk about hotel management, end of the day, once you do hotel management, you will be doing jobs in these star hotels, like 3-star hotel, 4-star hotel, 5-star, 6-star hotels. And unfortunately, in all these star hotels, there will be both veg and non-veg. Unlike in restaurants, okay, unlike in restaurants, in these star hotels, you won't find any you won't find any star hotel like, okay, only pure veg 5-star hotel, pure veg 5-star hotel, pure veg 4-star होटल, प्योर वेज 6-स्टार होटल. ऐसा आपको नहीं मिलेगा. जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स में आपको प्योर वेज, प्योर वेज और क्या कुछ रेस्टोरेंट्स दोनों होते हैं, वेज और नॉन वेज, और क्या जैसे रेस्टोरेंट्स में सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, वैसे आपको होटल्स में नहीं मिलेंगे. जब आप ये 5-स्टार 6-स्टार होटल्स के बारे में बात करेंगे, कम से कम आज का टाइम पे, एज ऑफ नाउ, इन टुडेज टाइम, एज ऑफ नाउ, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश कोई भी ऐसा 5-स्टार होटल या 6-स्टार होटल नहीं है जहाँ सिर्फ प्योर वेज भोजन सर्व करते हैं. when you say 5-star or 6-star hotel, when you say hotels in general, these luxury lodges, when you talk about hotels, hotels and luxury resorts, unfortunately both veg and non-veg are served in these hotels and luxury resorts. So that's why we as Jains, if we want to do job, I will say, please refrain from doing hotel management. आप 5-स्टार होटल में नौकरियां मत कीजिए. मैं वीडियो हर जेनियम को बोल रहा हूँ, ठीक है. I'm giving this message to all my dear Jain brothers and sisters, ठीक है. So if you want to do a job in these 5-star and 6-star hotels, for us Jains, I will say, please refrain from it. But as customers, if you want to go and enjoy and whatever celebrations you want to do, if you want to celebrate in 5-star hotels, please go ahead. You can go to 5-star hotels. Even me, I have also been to 5-star hotels. जब मैं मलेशिया गया था बहुत साल पहले, जब मैं सिंगापुर में था, और क्या बीच में मेरा समर वेकेशन के लिए जब मैं मलेशिया में गया था, और क्या जब मैं बैंकॉक थाईलैंड भी गया था, मैं एक्चुअली 5-स्टार होटल में गया था. During my school days, when I was abroad during my school days, sometimes for my summer vacation, I would be, I used to travel to Malaysia and Thailand. So that time, so that time, when I used to travel to Malaysia and Thailand, that time, I used to stay in 5-star hotels only. I used to go with my parents, and I used to stay in these 5-star hotels only in Malaysia, in that Kuala Lumpur in Malaysia, and even in Bangkok in Thailand. Whenever I went there for my summer vacations, I would normally stay in 5-star hotels along with my parents. So for us as Jains, going and staying in 5-star hotels is completely fine. If you're going to these star hotels as a customer, as a Jain, that is no problem. Because when you go as a customer, you have the luxury to say, you have the luxury to decide what you want and what you don't want.
because you are the one paying the money. But once you take up a job in these star hotels, then you will be in charge of everything in that hotel, be it from non-veg food to alcoholic beverages, to all those to all those alcoholic drinks, champagne, wine, beer, and all those non-veg food, seafood, along with vegetarian food and along with non-alcoholic beverages. You will be in charge of all those departments, where there is lot of violence caused. So for this reason, we as Jains, we need to refrain from doing hotel management. Thank you so much for watching this video with patience, and I will definitely see all of you very soon in my next video. Till then, take care, have a nice day, and God bless you all. And once again, nice to see all of you after a long time. So long time no see, and Jai Jinendra, Jai Siddhatma, Mahavir Bhagwan ki Jai Ho.